Hi everyone, this is Sushmita and welcome back to my channel. So today I'm going to show you all simple and fresh everyday makeup look which you can achieve just within 10 minutes. Also this makeup routine is especially for teenagers or someone who goes to work or for someone who really likes to do minimal and yet presentable makeup look. And today I'll not use any foundation, bronzer or highlighter. बहुत ही minimum products use करने वाली हूँ आज. So honestly guys, this is the routine which I used to do very often. So without any further ado, let's get started. So I have cleansed my face and now I'll be applying Goodvibes toner. And toner is very important because after cleansing our pores open up, and to close down the pores and control our oil that our face is producing, it's super important to apply toner. After that I'll be using L'Oreal Paris Crystal Essence to layer my moisture. I have been using this since a week. It's so watery, it's like a bit of toner which quickly absorbs onto the skin, and I love how naturally it feels on the skin. For moisturizer, I'll be using Nivea Light Moisturizer and इसे मैं यूज़ कर रही हूँ like last 2 to 3 years से, and बहुत ही hydrating moisturizer है, and मेरी skin type dry to sensitive skin है and it works very well for my skin. Now it's time for that step जो कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ, that is using sunscreen. And if you're wondering if you really need sunscreen every day, then the answer is yes. It's a must buy product as it protects us from getting wrinkles, tan or any dark spots. Now मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर, एंड मुझे आज भी याद है दैट ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज मैं कैसे यही वाला जेल यूज़ करती थी एज अ प्राइमर. एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी प्राइमर देन यू मस्ट गिव इट अ ट्राई. You will love it how easily it absorbs on the skin and create a smooth layer for the further process. Okay, so it's time for base now, but before that I need to conceal my dark circles using Elegant concealer in the shade Pure Beige. This concealer is so good, texture is amazing, it's so easy to blend, plus it gives you that amazing coverage. And for my base I'm going to use Lakme CC cream and I'm in the shade beige. To be very honest, मुझे daily basis पे foundation वगैरह लगाना बिल्कुल नहीं पसंद, so I got my hands on this one, and this is so affordable for college going girls, and it's so lightweighted and it gives your skin so glowy look. It's like your skin but a better one. So next I'm going to use Maybelline Compact, cause जो मैंने creamy products लगाए हैं वो धीरे धीरे melt होना start होगा, creasing होगा, so मुझे इसे set करने के लिए compact लगाना ही पड़ेगा. बट मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, मैं थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी क्योंकि मुझे dry look नहीं पसंद, dewy सा look ही पसंद है. So the base is done now and it's time to set my brows using the Wet n Wild Eyebrow Kit. इसे मैं अपने eyebrows set कर दूंगी अच्छे से. तो आपको पता है ये मैं threading बिल्कुल नहीं करती, तो मेरा brows जैसे है मैं वैसे ही set करूँगी. Brows set हो गया एंड अब मैं अप्लाई करूँगी थिन लाइनर. दिस स्टेप इज़ ऑप्शनल कॉज आप काजल भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली काजल लगाना बिल्कुल नहीं पसंद कॉज इससे मेरी आइज़ और भी छोटी दिखती है. बट या मैं कभी कभार काजल लगा भी लेती हूँ. For lipstick, I'm having two options. One is in the shade Nude Hue by Lakme and the other one is Naughty Nude by Nykaa. And today I'll be using the Nykaa one. It's a pinkish nude shade. तो
ब्लश के लिए आज मैं यूज़ करूँगी टिंट, ये DIY टिंट है। तो आज मैं इसे पहली बार आप लोग के सामने यूज़ करूँगी। इसका मैंने रीस्ट स्वेच किया था पहले, तो मुझे अच्छा लगा था, बट मैंने चिक्स पे ट्राई नहीं किया था, तो आज मैं कर रही हूँ। एंड इसका पिगमेंटेशन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी देख सकते हो कितना अच्छा, कितना इजीली ब्लेंड हो जा रहा है ये, एंड बहुत ही सटल सा ग्लो प्रोवाइड कर रहा है। आप देख सकते हो कितना फ्लश्ड ग्लो मेरे चिक्स पे ये प्रोवाइड कर रहा है। सो माई मेकअप इज़ डन नाउ and this is the final look. Thank you so much for watching, guys. I really hope you enjoyed it, and I hope this video was helpful to you. And if you did enjoy, then please take a moment to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you soon in my next video. Bye.